Hey guys, I'm Omi and welcome back to Omi's Time Travel. Today's video is all gonna be about GST. What the fucking hell is GST? As you know, GST stands for Goods and Service Tax, and yes, I'm going to tell you about GST, not in detail, but ऊपर से बताऊंगा what all knowledge you should have about GST. Earlier, before 1st July, there were 3 taxes mostly. 3 service taxes, 3 charges that used to be calculated by the government, and those were the Krishi Kalyan, then the second was Swachh Bharat, and the third one was higher education cess. Now there are no such taxes. There is a combination of all 3 taxes, and that's called as GST. There will be only one tax that will be applied to all the services and goods that you buy. It is actually not one tax, it is internally divided, but we won't know. अपने बिल में तो एक ही टैक्स दिखाई देगा, that is GST. Now I'll be explaining you about GST using few examples. The first one, consider you stay in Maharashtra, so you are buying some goods which is being manufactured inside Maharashtra only. So now the GST will be internally divided into 2 types: the state GST and the central GST. The center will collect some tax, while the state government of Maharashtra will also remove some tax from it. Internally there will be 2 GST applied, but we will see only 1 GST on our bill. Now consider the other example. If you are staying in Maharashtra and you are buying some goods from Gujarat, then there will be 1 tax, 1 GST, that will be the interstate GST. Interstate GST is nothing but the combination of service tax which is being applied by Maharashtra state government and the Gujarat state government. तो दोनों मिलके आपको एक टैक्स दिखाई देगा, and that is GST. Internally it will be divided into 2. समझ में बात आ रही है या नहीं आ रही है? Now I will tell you how to be smart in buying goods. Now the GST rates are fixed for all the states. So for example, consider 3 states: Maharashtra, Goa and Gujarat. Maharashtra will be having 8%, consider it. Gujarat will be having 12% and Goa will be having 5% GST. Now consider an example where if you buy a particular good from Goa and the same good you buy from Gujarat. If you buy from Gujarat, now the GST will be kind of 12 plus 8%, while if you buy from Goa, then the GST will be calculated as 8 plus 5%. So are you getting the point I'm trying to say? Some states will be having less rates, while some states will be having higher rate. Yes, that's GST. Now अभी हमें पता नहीं गवर्नमेंट ने कौन से स्टेट के लिए लेस रेट्स रखे हैं और कौन से स्टेट के लिए हायर रेट्स रखे हैं. सो अगर ये बात पता चल जाती है कि कौन से स्टेट्स में GST कम है, तो हम वहाँ बैंक अकाउंट खोल लेंगे. अकाउंट ट्रांसफर तो कर सकते हैं, बैंक अकाउंट खोलना बहुत मुश्किल होगा वो स्टेट में, बिकॉज यू विल रिक्वायर एड्रेस प्रूफ, बट यू कैन ट्रांसफर योर अकाउंट टू दैट स्टेट, राइट? सो इफ यू डू दैट, I'm talking about bank account, okay guys? So if you do that and if you buy goods from that state, सब सस्ते में पड़ जाएगा, right? So this is about GST guys. थोड़ा सा एग्जांपल दिया, थोड़ा सा बताया आप लोगों को कैसे दिमाग चला के आपको गुड्स लेना. By the way guys, if you are planning to build some body or go to gym, then this is the right time, because दूध और अंडों पे 0% GST है guys. yeah. और एक बात GST की बताना चाहता हूँ कि GST आने के बाद गरीबों के लिए जो चीज़ है वो और सस्ती हो गई है. मतलब सस्ती मतलब उसमें टैक्स कम लगा गया है, और जो लग्जरी वाली चीज़ें हैं वो और महंगी हो गई है. फॉर एग्जांपल, दूध और अंडे 0%, जैम 28%. तो बच्चों, अब जैम खाना बंद करो, भिंडी की सब्जी, आलू की सब्जी, गोभी की सब्जी खाना शुरू करो, क्योंकि ये चीज़ों पे GST कम लगने वाली है और जैम पे GST ज़्यादा है. एंड वन मोर थिंग हैज़ बीन मेड कंपलसरी. बोला था गवर्नमेंट ने कि 1 जुलाई तक यू हैव टू लिंक योर आधार कार्ड एंड पैन कार्ड. सो द डेडलाइन वाज 1 जुलाई. अब तक वो डेडलाइन निकाला नहीं गया, बिकॉज द लिंक इज स्टिल अवेलेबल इन द लिंक दैट विल बी provided in the description of the video. Guys, check it out. Go and link your Aadhaar card and PAN card. अगर वैसे नहीं किया गया तो आपका PAN card will be invalid. आपको इनकम टैक्स रिटर्न्स करते वक्त बहुत तकलीफ आ सकती है, या कोई भी चीज़ खरीदते वक्त बहुत तकलीफ आ सकती है, बिकॉज लिंकिंग योर PAN card and Aadhaar card is very important now. So this was about the basic thing about GST. Guys, spread this knowledge about GST. लोगों को पता नहीं है क्या GST है. People are getting confused. Tell them about GST. सस्ते चीज़ें और सस्ती हो रही है, बेसिक नेसेसिटीज सस्ते में मिल रही है, एंड लग्जरी गुड्स आर अवेलेबल एट वेरी हाई प्राइस.
That's GST, guys. Thank you, folks. If you like the video, hit the like button and do subscribe to Umesh Time Travel.